हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय न्यू बियर्ड एंड हेयर स्टाइल। मैंने कहा आपको थोड़ा शौक लगा के दिखा दूँ। सब कुछ काट दिया मैंने। एनीवेज, आज हम जा रहे हैं एक इफ्तार पार्टी में अपने बड़े ही अच्छे फ्रेंड, इंडियन फ्रेंड राकेश के घर। ठीक है, तो इफ्तारी वहाँ करते हैं और फिर आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। सी यू देयर। तो ये मेरी बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ, और ये मेरी लोकेलिटी है जहाँ पे मैं रहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्यारा सा मौसम है आज काफ़ी। यहाँ पे आपको सामने स्नो फिल्ड माउंटेन्स दिखा देता हूँ। ये देखें, तो ये मैं घर से जैसे ही निकलूँ ना, तो सामने ये व्यू होता है। बड़ा प्यारा मौसम है आज काफ़ी टाइम बाद। आप देख सकते हैं इतनी ग्रीनरी है ना। ये था आपको कि अगर आप ऐसे प्लेसेस पे रहते हो ना, तो आप खुद प्रोडक्टिव हो जाते हो काफ़ी हद तक। ठीक है, आप इंटरनली ऑब्वियसली अच्छा फील करोगे तो सारा कुछ आपसे अच्छा होगा। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप किस जगह पे रहते हैं, किन लोगों से मिलते जुलते हैं, किस जगह पे काम करते हैं। ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमेशा इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। और बाय द वे, मैं बाय वॉक जा रहा हूँ क्योंकि मेरे बिल्कुल करीब है। ठीक है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट स्ट्रीट में ही है। तो जाते हैं, मिलते हैं रागेश से। और ये मेरा फ्रेंड जो है ना, साउथ इंडियन है, तो आपको साउथ इंडियन डिशेस दिखाते हैं कि कैसे होती है। डोसा एंड पता नहीं क्या क्या, मैं तो कभी नहीं खाया। हाँ, सो आई एम फाइनली हियर एट माय फ्रेंड्स प्लेस। लेट्स गो इन। रागेश, हाउ आर यू? Yeah, very good. Come on, let's go inside. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस फॉर इफ्तार। Yeah, of course, of course. It's Okay, my pleasure. now you will tell us about everything. So I have to take off my shoes here. No, it's not. Okay. Oh, nice bedroom, bathroom, Bathroom. something kitchen, lounge. Yes, so this is the Already indoor. prepared. Ah, Yeah, cool. good. This Easy. is ice cream for you. Thank you very much. Okay, so what we have? So starting from the sweets, we have laddu. Uh This huh. is rabadi Uh huh. and sambar. This is talcha for biryani, mutton biryani, and this is for pepper chicken, bhaji, curd, chapati, coconut chutney, and Cool. still we have one more thing. Okay. It's the dosa. Perfect. South Indian dosa. But It's what is like- this sambar? This is like lentils or something like that, or something else? It's plain dal with some vegetables like. Cool. Okay. Yeah, Okay. yeah. And this is your balcony. Can Yes, I check? you can have. Let me check. Cool. What a nice view, man. We can see these mountains from here. This is awesome. So we are waiting for Arsalan. Okay. Okay. Let's go in. Okay. So what are you cooking now? So this is the dosa batter, South Indian dosa batter. Okay. So it's been fermented overnight Mm-hmm. and it is ready to become as like a dosa. Okay. So I will make the first dosa. So I made the pan heated and yeah, it's Okay. all set. But this flour is normal flour, or it's like rice flour? What is this? Rice with some urid dal, which is being mixed and like overnight it gets fermented. Oh, okay, perfect. So So, go ahead. yeah. No oil, no nothing on this pan. Yeah, I actually poured a little bit of oil and I have a spoon with the onion Okay. inside. What is and that I just for? rub for the softness of the dosa to come out. Cool. That's a nice trick. Yeah. I didn't knew it. Yes. Go ahead with your first dosa. Okay. We have some similar kind of thing, which is we call it pancakes or roshelli. Yes, same. Like- It's like that actually, but it will be like very thin slice. The first dosa will always be like that. So bear with me. Okay. Cool. And we have to eat this dosa with. With chutney, sambar, everything like what is that being prepared. Cool. Okay. So we just have to wait for our salan. Yes. Okay. So this is really nice, cozy small kitchen with a nice view. And let's wait for Arsalan. I just flipped it. Okay, good. Where is Mr. Arsalan? Assalamu alaikum. This is our friend Arsalan. I'm making video for my YouTube. Vlog.
How are you, Arsalan? Water first. We still have time. Still We have still time. have time, yeah. Kind of 5-6 minutes, maybe. Yeah. 5-6. Okay. So, Arsalan, we have something for you. Wow. Nice. ये इफ्तारी, ये पोकर का मैच और ये बंदा हलाल काम कर रहा है. Done with the iftar. Raagesh suggested that the view from his bedroom is really good. Let's have a look. Oh, mamma mia. That's perfect. That's fantastic. ऐसा बेडरूम का व्यू हो तो और आपको क्या चाहिए. So आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. फिर मैं